symbols and images in Look Back in Anger. Symbols and imagery in Look Back in Anger. Even with a naturalistic structure, Osborne devised a vocabulary of theatre which included both verbal and non-verbal theatrical symbols, ranging from the very appearance of the theatre itself to the items of stage setting, the various modes of acting postures, the absurd sounds and movements. So, I think when we were discussing about the features of modern literature, features of modern drama, I think we were also discussing about naturalism and realism. Realism as a स्टाइल और रियलिज़म एज अ टेक्निक. और मैंने शायद ये बोला था तुम लोगों को कि रियलिज़म इज़ वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ और वन ऑफ द मेजर टेक्निक्स इन मॉडर्न लिटरेचर, especially seen in the Victorian era, though realism continued in the modern literature, even in drama. But another form of रियलिज़म इज़ नेचुरलिज़म. तो यहीं पे ये नेचुरलिस्टिक कहा गया है कि एकदम असली सा दिखने वाला थिएटर, असली सा दिखने वाला सेट. इन द क्लासिक रियलिस्ट टेक्स्ट्स which is the name of non-modern texts, the setting or the background is usually not doesn't look natural, but in these cases, when the modern drama started to be staged post 1900s in the 20th century, natural setting, natural light, all of these things started to be used. So that is what is being said here, that even with a naturalistic structure, Osborne devised a vocabulary of theatre. So verbal and non-verbal theatrical symbols. Verbal, which are said, bola jane wala, talked, and non-verbal, sometimes we do not speak, but a look, a gesture, which does not involve a sound but conveys some kind of meaning, can be regarded as a non-verbal symbol, theatrical symbol. So all of these things are there in the drama, are there in the plays of John Osborne. And since we are dealing with symbols and imagery, there are also some symbols. We all know what a symbol is. A symbol stands for something else. A symbol is something that stands for something else. For example, the symbol of the skull and the bones, they signify danger. So we will see some symbols. So in your case, it is not just enough to highlight or not just enough to talk about the symbols, but you should also be able to tell that why is the symbol there, what does this symbol actually add to the play, add to the meaning of the play. If you can say this, then your answer becomes complete or better. By verbal repetition of the sameness of reviews of different books, Jimmy sets the tone of the play by referring to his feeling of boredom. Why do I do this every Sunday? Even the book reviews seem to be the same as last week's. So in the first act, Jimmy, Cliff, both are seen reading a newspaper,
and Jimmy is bored because he has to run a sweet shop, and according to him, he is qualified to do a better job than just to run a um, sweet shop, and hence he is bored, he is frustrated, and that is the tone of the youth in the entire play. Um, this measure of drabness means boredom, and monotony is sharply stressed through the contents of the three newspapers. The culmination of such startling repetition is in Act 3, Scene 1, which is a repetition of the opening scene in Act 1. The experience of boredom and monotony is thus concretized on the stage through a non verbal but symbolic language of the play. So, one of the first symbols that we see in the play or throughout the play is that there is a lot of repetition, and repetition is something that is the core of comedy. You might say that Look Back in Anger is not a comedy. ऐसे सीरियस है दोनों, और यहाँ पे कोई हंसी मजाक का बात नहीं चल रहा है, तो ये कॉमेडी कैसे है? But if you look at the definition of comedy, then a comedy ends in happy reunion. All the comedies written by Shakespeare or later, even in this play, we know that ultimately Allison and Jimmy, they will uh, they, they will come to each other. They will have a truce. They will have a ceasefire between them, and Allison will come back to Jimmy, and there will be a reconciliation, a happy reunion. So, but that is just not the only feature of a comedy. One of the languages of comedy is that it repeats itself. One of the best ways in which you can have fun, or in which often you find in movies that people are having a comic situation by repeating what the other characters are saying. So if you keep repeating what I am saying, or if you do it with your siblings or your parents, that if the parent is angry and he or she is saying that, get out of the house, and you are just simply repeating it, get out of the house, so the other person present in the situation might laugh, the angry person will get angrier. But that is what is happening in Look Back in Anger. The first act, the opening of the first act, is similar, or in fact identical to the opening of the third act. फर्स्ट एक्ट में एलिसन, क्लिफ और जिमी बात कर रहे थे, एंड एलिसन वाज आयरनिंग क्लोथ्स. इन द थर्ड एक्ट, Jimmy, Cliff, and Helena are talking, and Helena this time is ironing the clothes on a iron board. So this repetition on one hand symbolizes monotony. जैसे एक ही क्लास बार बार होता है, एक ही चीज़ बार बार हम लोग बोलते हैं, तो इट बिकम्स मोनोटोनस, इट बिकम्स बोरिंग, इट बिकम्स ड्रैब. सिमिलरली द मोनोटनी, द ड्रैबनेस, द बोर्डम in Look Back in Anger is presented through this repetition of the same scene. The stage accessories like the ironing board, the pile of clothes, newspapers, pipe, clouds of smoke, the figure of one woman, and then the other repeating the same act of bending over the ironing board, wearing a shirt of Jimmy's. All these collectively constitute the non-verbal symbolizing language of Osborne's theatre. तो क्या क्या symbols हैं? What are the various symbols that we find here? Ironing board, pile of clothes, newspapers, pipe मतलब वो फूंकने वाला जो पाइप होता है, वो smoking pipe, not like PVC pipe or water pipe. Clouds of smoke,
हमेशा ही इस घर में क्लाउड्स ऑफ स्मोक मतलब कोई ना कोई सिगरेट या पाइप पी रहा होता है, तो उसका जो स्मोक है वो पूरे घर में फैला रहता है. सो दैट इज़ द स्मोक, क्लाउड ऑफ स्मोक. Or we can see in most of the acts, in both the acts, a figure of a woman is ironing clothes, which has other symbols also. And interestingly, Helena in the third act is seen wearing Jimmy's shirt. So we will talk about was what that symbolizes. अगर कोई किसी का शर्ट पहनता है तो उससे क्या सिंबल आ सकता है, उससे क्या सिंबलाइज हो सकता है. वी विल सी दैट. These objects, as also other apparently insignificant things like the toy bear and squirrel, Jimmy's trumpet, his shirt and Allison's slip, the church bells, an unseen landlady downstairs, a storage tank in the middle of the room, the articles of uh, makeup on the dressing table, not only build up the drabness and monotony of their existence but also symbolize the lost possibilities that could have been structured out of these common household tidbits. और क्या सिंबल्स हैं? जिमी का ट्रम्पेट है, टॉय हैं बेयर एंड स्क्विरल, जिमी का शर्ट, एलिसन्स का स्लिप, स्लिप इज़ अ काइंड ऑफ अ ड्रेस, a storage tank in the middle of the room. एक टैंक जैसा है, एक there is a vessel which can store things right in the middle of the room, and there is a landlady downstairs. So these common objects, these very everyday objects, make the play appropriate for a kitchen sink drama. The very first day I told you about the kitchen sink drama, that is a domestic drama where the domestic life, everyday life of the people are shown. So but this also signifies the lost possibilities कि क्या क्या हो सकता था, लेकिन किसी भी चीज़ से कोई खास कुछ नहीं हुआ. And that also signifies as to why the title is also signified here. Look back in anger. When we lose opportunities, then we look back at them and our heart is filled with anger कि क्यों नहीं वो opportunity हमने इस्तेमाल किया, क्यों नहीं वो opportunity हमें मिला. That there's always an anger about that. The iron and the ironing board with the background images of stagnation and acts of washing and ironing with a ritualistic insistence on cleanliness evoke the analogy of the rottenness of the state of Hamlet's Denmark. Iron है और ironing board है, which are very important symbols in the play, and it is usually worked upon by Allison or Helena. So what does that signify? बैकग्राउंड में जो इमेजेस हैं वो इमेजेस हैं स्टैग्नेशन के. स्टैग्नेशन मीन्स when something is stopped, when something is not moving properly, when something is not in the flow. वॉशिंग, आयरनिंग, ये सब एवरीडे एक्टिविटीज़ हैं, बहुत ही कॉमन एक्टिविटीज़ हैं. इनमें ज़्यादा these are not very important things. I mean, not important things in the sense that they are mundane activities, common domestic activities, not considered to be very important, but they are done in this house in a kind of a ritual. जैसे भगवान का पूजा में या किसी भी तरीके का शादी ब्याह है,
उसको रिचुअल्स कहते हैं, उसको मानना, उसको फॉलो करना, दोज आर रिचुअलिस्टिक, लाइक अ रिचुअल. एंड पीपल आर वेरी केयरफुल अबाउट फॉलोइंग अ रिचुअल. नहीं तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, या शादी में कोई प्रॉब्लम होगा, या किसी और ओकेजन में कोई प्रॉब्लम हो सकता है. So they do it very clearly, they do it with great concentration. But this cleanliness evokes comparison, create कर रहा है, analogy comparison है, comparison between the situation in Hamlet's Denmark. Hamlet is a play written by Shakespeare, and कभी कभी ऐसा भी कुछ क्रिटिक्स हैं जो जिमी पॉटर को हैमलेट के साथ कंपेयर करने लगते हैं, बिकॉज हैमलेट was also kind of a frustrated and lost rebel without a cause, and similarly Jimmy is also. So ये जो सिंबल है, आयरन एंड आयरनिंग बोर्ड एंड ऑल द एसोसिएटेड डोमेस्टिक रिचुअल्स, छोटी छोटी चीज़ें जो की जा रही हैं, वो डेनमार्क में होने वाले जो प्रॉब्लम्स थे हैमलेट प्ले में, उसको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको कहीं ना कहीं सिंबलाइज करते हैं. In this context, the ironing board perhaps symbolizes a social mechanism or agency that lends a glossy illusion of importance to trimmed appearance, and thus helps society in providing a cover up for moral and spiritual depravities and various forms of antagonism and antipathy. अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, इस संदर्भ में देखा जाए, तो आयरनिंग बोर्ड क्या है, एक सिंबल क्या किस चीज़ का है, सोशल मैकेनिज्म. जैसे जेल कहते हैं ना, जेल का और एक नाम होता है करेक्शनल फैसिलिटी. आई डोंट नो इफ़ यू हैव एवर सीन द बोर्ड in front of a jail. I hope none of you, including me, have been inside a jail for have been arrested or something. But we might have seen a board in front of the jail that it is also called a correctional facility. Correctional facility मतलब जहाँ पे लोगों को ठीक किया जाता है, सही राह दिखाई जाती है. But we all know that jail is far from a place where people are corrected. वहाँ पे लोग एक बार जाते हैं तो और भी ज़्यादा यूजुअली और भी ज़्यादा बुरे बन के वापस आते हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर इन्फ्लुएंसेस देयर. सो और एक तो जेल जैसा एक मैकेनिज़्म है जहाँ पे लोगों को सीधा किया जाता है, जहाँ पे लोगों को करेक्ट किया जाता है. वैसे ही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल या marriage will be an appropriate example, but to come to marriage I need to explain why school, college, university, hospital are places where people are corrected. तो हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि कुछ तकलीफ़ हुआ है, हाथ टूट गया तो टेढ़ा हो गया. आई थिंक तानिया, योर हैंड ब्रोक, राइट? You had a broken arm, so you went to the hospital and they put the arm in the right order, करेक्ट कर दिया, ठीक कर दिया, राइट? उसी तरीके से स्कूल में भी हम लोग जाते हैं, हमारा बिहेवियर अगर बुरा होता है तो कोई टीचर, तुम लोगों को तो कभी पीटा नहीं गया, बिकॉज बाई देन कैपिटल पनिशमेंट, व्हेन यू आर इन स्कूल, कैपिटल पनिशमेंट was illegal. बट व्हेन आई वाज इन स्कूल, अगर मैं कुछ शरारत करता था या दूसरे लोग कुछ शरारत करते थे, तो यूजुअली वी वेयर लाइक बीटन अप, छड़ी से हमको सही कर दिया जाता था, वी वेयर करेक्टेड.
and not in college, not in university, but in college and university we are being yelled at, as I yell at you. चिल्लाता हूँ तुम लोगों पे, और तुम लोगों को सही करने का कोशिश करता हूँ, so that you come on time, or you come regularly, so, or you do not cheat in the exam, and so on and so forth. But what about marriage? Zaisha, do you think that marriage can be marriage is an institution like school, college, university, hospital, jail, like family? So how is marriage going to correct someone? बहुत ही आसान सा जवाब है. यस जायशा, यस सर. तुम्हें लगता है कि शादी जो इंस्टीट्यूशन है उससे लोग करेक्ट हो जाते हैं? सर ऐसा नहीं है कि वो कर देने से सही हो जाएंगे लोग. लेकिन लोग तो ऐसा बोलते हैं ना कि इसकी शादी करा दो तो ये लड़का सीधा हो जाएगा, है ना, ऐसा सुना है. ऐसा सुना है सर, लेकिन ऐसा नहीं होता है कभी ऐसा भी. नहीं बहुत होता है. रेयर केस में हो जाए तो Right. हो जाए. Yes, Tanya is writing about responsibility, because if you are given a responsibility, then you do not think about fighting, or you do not think about having number of affairs, or you do not go to the pub or things like that. But as Zaisha is saying, far from the truth, marriage does not really do anything. और अगर मैरिज नहीं होता है तो बोलते हैं कि बच्चा ले लो. तो बच्चा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूजुअली एक पुरुष को, एक मेल को सही रास्ते पे लाएगा. अगर पुरुष सही रास्ते पे नहीं आना चाहता तो दुनिया का कोई ताकत उसको सही रास्ते पर नहीं ला सकता. बट sometimes, as Zaisha pointed out, rarely it has been found that a man becomes, usually a man, and we will talk about the woman later, um, usually a man becomes mellow, थोड़ा सा नर्म हो जाता है जब वो अपने, यूजुअली अपने बेटी को अपने गोद में खिलाने लगता है. Because now this hurly big uh, fighter like man has his total attention being devoted to a baby, if not the wife but to the baby. थोड़ा सा चेंज कभी कभी देखा गया है, नॉट ऑल, बिकॉज अगर ऐसा होता तब जितने लोगों की शादी हुई होती उनमें से कोई मर्डरर नहीं होता, उनमें से कोई चोर नहीं होता, उनमें से कोई शराबी नहीं होता या जुआरी नहीं होता, if that was true. But usually it is thought that school, college, university, शादी, जेल, इन सब चीज़ों में क्या होता है कि लोगों को सही कर देते हैं, लोगों को ठीक रास्ता दिखा देते हैं. रिलीजन, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा, they are always trying to correct the trajectory, the way in which people move. So, yes, Zaisha, you want to say something? सुनो. Okay. So, यहाँ पे जो बोर्डिंग, जो आयरनिंग बोर्ड है जिसके ऊपर कपड़े आयरन किए जा रहे हैं, वहाँ पे आयरन करने से क्या होता है कपड़ों को? वो क्रीज चला जाता है, स्ट्रेट हो जाते हैं, ट्रिम्ड हो जाते हैं, फिर तह करके उनको रख दिया जाता है. So there is an illusion of order in the society, but there is actually no order in the society according to the modern playwrights or the modern literature writers. But all of these things, जो भी हमारे में स्पिरिचुअल या सोशल डिप्रेविटीज़ हैं या एंटागोनिज्म्स हैं, एंटीपैथी है, ये सारे, एंटागोनिज्म मीन्स किसी के साथ हॉस्टाइल कुछ बिहेवियर करना, किसी से दुश्मनी मोल लेना. एंटीपैथी मीन्स नॉट फीलिंग एम्पैथी फॉर योर फेलो पर्सन. या डिप्रेविटी मीन्स कोई शैतानी, कोई छिछोरापन, उसको डिप्रेविटी कहते हैं. तो ये सब
जो मॉरल और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको क्या किया जाता है, इन इंस्टीट्यूशंस में ढक दिया जाता है. If you have seen this beautiful web series called Chidiya, I think it was in Netflix. If you have seen it, सर चिड़ैया. Chidaiya, yes, Chidaiya, right, not Chidiya. Um, it was about marital rape, and even the Supreme Court in our country, which is so liberal and which is so powerful, says that they cannot pass a judgment regarding non consensual sex even in a marriage. So, is marriage really an institution where everything becomes right? No. Marriage is an institution that hides the man's uh, desire for sexual satisfaction. चिड़ैया में वही दिखाया गया है कि मैरिज के नाम पे रेप कर सकते हैं. सिमिलरली कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि हम सही हैं. यू गेट मार्क्स फॉर राइटिंग someone else's copies. You are taught literature as if you are in a kind of a, in a hurry, uh, because it's a semester system and you have to rush. इसीलिए तुम लोगों को मैं जो पिछले सेमेस्टर से कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर्स दे रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अगर तुम लोग क्लासेस में आते हो तो, so that you can mug up these answers and vomit on the answer script. सब पास हो गए, सब शिक्षित हो गए, ग्रेजुएट हो गए, ऑनर्स विथ ऑनर्स, बाप रे. और उनको कोई एप्लीकेशन लिखने दो, कुछ बोलने बोलो, कुछ करने बोलो इंग्लिश में, या कुछ प्रेजेंटेशन करने बोलो, तब समझ में आ जाता है कि दे हैव लर्नड नथिंग. सो स्कूल में भी वही होता है, एक जैसा यूनिफॉर्म पहना के सबको एक जैसा बनाने का कोशिश करते हैं, सबके अंदर एक जैसा भाव लाने का कोशिश करते हैं. बट दिस इज़ ऑल ए आई वॉश. ऐसा नहीं होता है, यू कांट डू दैट. सो this ironing is an example of an attempt by the society to create some kind of an illusion of order, not real order. One important item of theatrical symbolism used by Osborne in Look Back in Anger is the cluster of sound effects. बहुत सारे sound effects हैं, Osborne इसका इस्तेमाल कर रहा है. The church bells, Jimmy's trumpet, the thud of the iron, the radio music and the droning sound of Jimmy's voice. क्या क्या साउंड हैं? साउंड भी एक सिंबल हो सकता है. क्या क्या साउंड है? चर्च बेल, जिमी का ट्रम्पेट, आयरन को रखने का जो धप से आवाज़ होता है, पहले के आयरन बहुत हैवी हुआ करते थे. एंड दिस कैन ऑल्सो गिव यू अनदर आइडिया दैट एलिसन एंड हेलेना वो सारे कपड़े आयरन कर रहे हैं, नॉट जिमी और नॉट क्लिफ. कौन कर रहा है? औरतें कर रही हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल इन द सोसाइटी दैट इज़ द वर्क ऑफ अ वुमन. खाना बनाना, कपड़े धोना, कपड़े तह करना, बच्चों को पालना, these are all the sacred duty of the mother or the sister or the wife. But in this case, imagine that the iron is heavy. The woman who can easily take the iron in the hand and iron the clothes must have a strong hand.
उसके हाथ में भी बहुत ताकत होगा. And if you watch women who are in the business of constructing the roads, they carry equal amount of weight on their heads like the men do, and still women are considered to be weaker. और उनके पीठ में तो एक बच्चा भी होता है कभी कभी. I don't know if you have ever seen women like that. कड़े धूप में, अब इस मई महीना, अप्रैल मई जून के धूप में वो लोग रास्ता कंस्ट्रक्ट करते हैं, रास्ता तैयार करते हैं, और भारी भारी सामान उठाते हैं. दे आर एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस, एंड समटाइम्स दे आर ऑल्सो कैरिंग अ बेबी behind their back. I was reading an article today on Facebook. I think it was on Facebook, that there are many people in Maharashtra or Madhya Pradesh who are engaged in the agriculture of, I think, sugarcane or some other product, some other farm, and they, yes, the uterus thing, they cut away their uterus. Why? Because दे डोंट वांट टू बी मदर्स. बिकॉज जब माँ बनते हैं तो कुछ महीनों के लिए लोग उनको काम नहीं देते हैं. उनको लगता है कि ये काम नहीं कर पाएंगे, और इसलिए उनको काम नहीं दिया जाता जब वो माएँ बनती हैं. तो इसीलिए ये औरतें क्या कर रही हैं, मर्द तो सुनने से रहे, तो ये औरतों ने क्या किया कि अपना पेट, मतलब डॉक्टर से ही अपना पेट ही काट दिया. सो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ मैनी women in our society. And I keep telling you guys that many ladies are here present, that you are very lucky. तुम लोगों को लगता है कि हाँ, हम लोग को बहुत तकलीफ़ है और हम लोग गरीब हैं और पैसा नहीं है उतना, और ऊपर से पीसी सर का क्लास करना पड़ता है, क्या बकवास करता रहता है हमेशा, ये भी सुनना भी पड़ता है. But don't you think that you are lucky that you do not have to cut your uterus out, or you do not have to, you know, make such sacrifices which many women do, including sometimes your mothers. But that is not the focus of the play. The focus of the play is on the pain and agony of whom? बेचारा जिमी. क्योंकि मर्द को भी दर्द होता है, तो यहाँ पे मर्द के दर्द के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, रादर देन एलिसन. रिमेंबर, एलिसन ऑल्सो अंडरटुक or underwent an abortion because Jimmy was not ready to become a father. So that is also a kind of symbol here. Anyway, we are talking about the sounds. So church के bell का sound बार बार आता है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर चर्च है आसपास में, जैसे मंदिर का या मस्जिद का या गुरुद्वारे का कुछ आवाज़ आता है हमारे लोकेलिटीज़ में, जहाँ पे अगर कुछ मस्जिद हो या टेम्पल हो, कुछ ऐसा, तो उनके वहाँ पे चर्च है, और चर्च का बेल का आवाज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से वो लोग बजाते हैं. क्योंकि हमारे भगवान तो बहरे हैं, उनको ज़ोर ज़ोर से लाउड स्पीकर पे हमारा भक्ति हम लोग करते हैं कि अरे यार, हमको पता है हमारा भगवान अंधा है, बहरा है, he cannot see, he or she or it cannot see or cannot hear. That's why we play our bhakti songs and our azans and our church bells so loud, ताकि भगवान को सुनाई दे कि देखो हम लोग भक्ति कर रहे हैं. So but Jimmy is very against these church bells. He calls them those bloody church bells. क्यों? क्योंकि religion is again another aspect in our society which, instead of trying to make things better, are actually making things worse. Nirjala, can you give an example of an incident where people, where religion, institutionalized religion, that is the religions that we have in our society, creating more trouble than actually solving the problem? It's a very easy example. निर्जला, मतलब तो हिंदी में बोला मैंने, अब कौन सी भाषा इस्तेमाल करूं? टेम्पल
चर्च, मॉस्क, गुरुद्वारा, रिलीजन, जो रिलीजन है, जो धर्म है हमारे, उससे हमें फ़ायदे से ज़्यादा कहाँ नुकसान होता है, या होता भी है? तुमको लगता है कि नहीं हमारा रिलीजन बहुत अच्छा है, और यू नो आवर temples and our religious institutions, they really help us in so many ways. They do, but there are troubles also. Just like in Jimmy's case, there is he is not really happy with the church bells, because the church bells signify the church, that is a kind of religion which was not very helpful for the betterment of the people in England. Anyone, any examples? Saina? like हाँ बोलो. Yes, Tania was saying something. sir, mostly like Yes, Tania, go on. सर लाइक मोस्टली स्पीकर्स ऑन रहते हैं कभी कभी फेस्टिवल्स में, या कभी कभी रोड ब्लॉक हो जाते हैं किसी हम्म. पर्टिकुलर रिलीजन का। सपोज आई डोंट वांट टू टेक नेम, हम्म. किसी पर्टिकुलर रिलीजन की वजह से रोड ब्लॉक हो जाते हैं, सो वो दीज ऑल सारे आर द रिलीजन के वजह काइंड्स। से ही होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई वन यस पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है. एग्जैक्टली सर। Yes, so there are many ways in which religion, instead of solving the problems, create them. बट हाँ, रिलीजन, अब भगवान तो कहीं पर आके किसी को नहीं बोलता है ना कि रोड ब्लॉक कर दो, किसी को मार दो, गंगा में कचड़ा फेंक दो, या दूसरे किसी रिलीजन को गाली दो. आई डोंट नो इफ गॉड एवर केम डाउन ऑन अर्थ एंड सेड दीज थिंग्स टू द पीपल. Yes, false babas, they spread hatred and false things. They say very wrong things in front of the people. So, but the thing is that these people are not religion. Religion is something that we can believe in our hearts. We don't need a temple, we don't need a mosque, we don't need a church, we don't need to go somewhere, we don't need to uh, you know uh, play on the loudspeakers or DJ or anything. Religion is something that we might believe in our private lives. We may not become public about it. Even if we become public, that's okay, but to create problems for someone else is wrong. So that is why, even in the case of Look Back in Anger, the church was a problem. Um, you know, in the Second World War, or in the First World War more so, not so much in the Second World War, चर्च चर्च में बैठ के, चर्च में खड़े होके जो फादर होते थे वहाँ पे, वो यंग सोल्जर्स जो थे उनको बोलते थे कि अगर आप युद्ध में जा रहे हो तो अच्छी बात है, और आप अपने देश के लिए कर रहे हो तो देश के लिए करना मतलब भगवान के लिए करना. So country and God became the same, and if you die in the battle, then you are fighting for good, and the evil, in the case of evil, will be defeated. But the funny part is, can anybody tell me what was the religion of Adolf Hitler? I hope all of you know about Adolf Hitler, right? Is there anyone who doesn't know about Adolf Hitler? एडोल्फ हिटलर कौन था? हेमंत, हु वाज एडोल्फ हिटलर? हैव यू हर्ड ऑफ दिस नेम बिफोर? एनीवन? एडोल्फ हिटलर? So he was from Germany, Catholic, like ही वाज Jewish के कौन? कैथोलिक चर्च में उसका अपब्रिंगिंग हुआ था, and he was the main leader of Nazist party, यस, ही वाज अ नाजी. and he was against Jews against रहता था.
Yes, political leader and dictator, and he was always spewing venom against the Jews. So he was a Catholic Christian, and Britishers were also, many of them were Catholic, some of them were Protestants, but mainly they were Christians. हमें उतना डिवीजन पता नहीं है, लेकिन yes, Roman Catholic. But the the people in the churches, they used to say this, that you are fighting the evil, because Adolf Hitler is the representative of evil, and he was a staunch follower of Christianity. So what does that mean then? धर्म के नाम पर जब भी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को मरने या मारने को बोलता है, that is utilizing the religion, that is utilizing the God's word in a very bad way, in a demeaning way. So इसीलिए चर्च जो था वो भी एक ऐसा सिंबल था, वो ऑपरेशन का सिंबल था इन लुक बैक इन एंगर. सो यहाँ पे बोला जा रहा है एक एक करके. द चर्च बेल्स रिमाइंड जिमी ऑफ हिज फेलियर टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, हिज अटर फेलियर इवन टू ब्रिंग अबाउट हारमनी इन हिज पर्सनल लाइफ. क्योंकि चर्च में जाके शादी भी होती है, तो वो चर्च बेल्स जब भी बजते हैं उसको अपनी शादी की याद आती है, और वो गुस्सा होने लगता है कि उसने शादी क्यों किया. जैसे एलिसन भी एक बार बोल रही थी कि उसने गलती कर दी जिमी से शादी करके. वो हमेशा शादी के बाद ही पता चलता है कि गलती हो गई. The routine ringing of the church bells indicates the inexorable continuation of orthodox conventions of bourgeois life, in total defiance of and indifference to the sufferings of common people like Jimmy. Inexorable मतलब जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल चार्ज लग गया है जिसको मतलब बेगुनाह साबित नहीं हो सकता कभी, वो इनएग्जॉरेबल. ऑर्थोडॉक्स कन्वेंशंस जो थे, जो पुराने रीति रिवाज थे, और वो हमेशा दीज ओल्ड ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स, they are mostly against the common people, they are mostly against the poor people. कैसे? जैसे कि देखा होगा तुम लोगों ने कि बहुत सारे ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जहाँ पे एक वीआईपी एंट्री होता है और एक कॉमन पीपल का एंट्री होता है. रिसेंटली शायद बिहार में 7-8 लोग भगदड़ में मर गए. दे वर गोइंग टू अ टेम्पल, एंड the entrance, the VIP entrance is usually bigger than the entrance for the common people. तो यही सब जो मुद्दे हैं ये लुक बैक इन एंगर में बार बार आ रहे हैं, एंड जिमी इज एंग्री रिगार्डिंग दैट. सो दैट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द एंगर पार्ट. वाई इज जिमी एंग्री? बिकॉज जिमी कैन सी वट वी कैन सी. कि रिलीजन बोलो, कोर्ट बोलो, कहीं कुछ भी बोलो, वहाँ पे जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास इन्फ्लुएंस है, सोर्स है, वो आगे चला जाता है, और जिसके पास नहीं है वो पीछे रह जाता है. एंड द ओनली थिंग दैट कुड गिव यू समथिंग टू फाइट विथ अगेंस्ट ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इज़ एडुकेशन, जिसका तुम लोग बहुत बारी फ़ायदा नहीं उठाते हो, एंड यू थिंक ओके वी डोंट नीड टू लर्न टू मच, अपनी लाइफ तो सेट है जैसे चल रही है, सो वी डोंट नीड एजुकेशन. एनीवे, द ट्रम्पेट विथ इट्स एसोसिएशन ऑफ द रोमांटिक ऑरा ऑफ नाइटली militancy stands for Jimmy's private pursuit of his own ideal against the norms and standards of upper class culture. So Jimmy belongs to the working class, and Allison, her father, Colonel Redfern, they all belong to the higher class. And when we जैसे अभी तुम लोगों को लग रहा होगा, तुम लोगों को पता नहीं लग रहा होगा कि नहीं, बट मे बी योर पेरेंट्स और सम अदर पीपल माइट फील कि अच्छा कॉलेज तो अभी बंद है, तो ये टीचर्स क्या कर रहे हैं, ये बैठ के अपना सैलरी ले रहे हैं. Because if you remember in 2020, in the COVID time, maybe you were too young back then, but you might have heard of this, that why would the teachers take their salary if the college or the schools are closed? They are not doing anything. Yes, there were teachers who did not take even online classes.
but some teachers did, most of the teachers did, but all they had to hear was that they are getting their salary without doing anything, because as if going to the college physically is something that is that makes them worthy of their salary, whatever. So this upper class, there's always an antagonism between the upper class and the lower class. The people who work physically, they are always angry against those who do not work physically. Even if teachers and so called people who are working physically, they are doing the same thing. Somebody is doing with their mind, somebody is doing with their bodies, but still there is an antagonism, and there are some people are always angry against the rich people. Teachers aren't rich, but that's a different thing. But people are angry at like the aristocrats कि हाँ बड़े घर में पैदा हो गया और उसको सब सहूलियत मिल गया, हमें नहीं मिलता. So go and get your birth in a rich family or get married into a rich family. Who is stopping you? So but Jimmy has married a girl who belongs to a rich family. बट जैसा अभी मीम आता है फेसबुक में, बोलते हैं ना कि कोई अमीर लड़की, कोई लड़का बोल रहा होता है कि कोई अमीर लड़की ढूंढ रहा हूँ जिसके बाप के पास बहुत पैसा है, और उसको उसके घर पे मुझे मैंने सोचा था मुझे बुलाएगा और 10 लाख रुपए मेरे को देकर बोलेगा निकल जाओ मेरी बेटी के ज़िंदगी से, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो शादी करवा देते हैं. एंड नाउ besides being a poor man, I have a wife to feed. So but that's what Jimmy did. I mean, I am not saying that Jimmy wanted some money from the rich family, but he is angry against the rich family of Allison because Allison का पापा कर्नल है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं. Allison's brother is a politician because they had earlier, they had been ruling earlier, and Allison's brother, I am forgetting his name, is a politician. So उसके उनके पास ही सारा पावर सब कुछ है. So these are the symbols. The combination of shirt and skirt worn by Allison or Helena symbolizes their surrender to Jimmy's will, to his antipathy to women. जैसा मैंने कहा था कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे. ये शर्ट जो पहना है एलिसन ने, तो उसका क्या मतलब है कि जिमी के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया. जैसे हम किसी का अगर कपड़ा पहन लेते हैं या फिर उसका कुछ ले लेते हैं, तो वी शो अ काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस इफ नॉट सरेंडर. One may feel like ignoring the cliche of homosexuality applied to this combination of shirt and skirt, and the symbolic meaning of Jimmy's shirt may be an amplification of the inadequacy of marriage as an institution or means for male female companionship. Allison puts on a different dress while going out with her father होगा, while going out with her father, and this change is suggestive of her growing self assertion. Such change of dress by Helena at the end objectifies होगा, objectivities नहीं, गलत लिखा है, objectifies the change of situation with the return of Allison. तो ड्रेस कौन कैसा पहन रहा है उसके ऊपर भी यहाँ पर एक सिंबल है कि अगर एलिसन ने जिमी का टी शर्ट और अपना स्कर्ट पहना है, तो इसका मतलब क्या है कि एक तरफ से देखा जाए तो एक देयर इज एन इनकम्पैटिबिलिटी. मतलब स्कर्ट के साथ तो कोई टॉप पहनना चाहिए. आई एम नॉट वेरी वेल एक्वाइंटेड विद इट. शर्ट्स भी पहन सकते हैं आई गेस. आई डोंट नो. आई मीन आई एम नॉट इनटू फैशन एंड ऑल. सो स्कर्ट के साथ टॉप पहनते हैं या फिर कुछ ऐसा पहनते हैं जो स्कर्ट के साथ जाए. नॉट अ बिग शर्ट ऑफ अ मैन. सो दैट शोज इनकम्पैटिबिलिटी, मैरिटल डिस्कॉर्ड. ठीक है, लेकिन जब वो अपना ड्रेस चेंज करने लगते हैं, देन दे शो सम काइंड ऑफ एजेंसी. दिस वर्ड एजेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैरेक्टर्स कैन शो एजेंसी. Characters can show that they are doing something. Okay. The most prominent of the non-verbal symbols, non-verbals नहीं, non-verbal होगा,
Non-verbal symbols in look back in anger is the pair of toys. ये 5 marks का क्वेश्चन आएगा, पकड़ ही लो. Comment on the use of squirrel and bear. What does the squirrel and the bear represent in the play? So the ये क्या है? A teddy bear and a squirrel, and this is their make believe attempt at realizing a harmony of meaningful partnership. Allison clarifies the meaning of the game in game to Helena होगा, to Helena in Act 2. We could become the little furry creatures with little furry brains, and they are all love and no brains. तो ये लुक बैक इन एंगर में ये स्क्विरल और बेयर फर्स्ट एक्ट में भी आते हैं और थर्ड एक्ट में भी आते हैं. और कभी देखा जाता है कि स्क्विरल और बेयर को एक कैबिनेट में रख के बंद कर दिया जाता है. तो स्क्विरल इज़ एलिसन एंड बेयर इज़ जिमी. और इनका जो ये प्ले है, इस प्ले में इनोसेंस है, सेक्सुअलिटी भी है ऑफ कोर्स, बट इसमें एक इनोसेंस भी है कि ये लोग लड़ना छोड़कर इस सिंबॉलिक वे में एक दूसरे से प्यार जताते हैं, क्योंकि दीज आर सॉफ्ट टॉयज. एंड इंस्टेड ऑफ थिंकिंग with their brains, these animals signify the lack of logical thinking. Animals, it is thought that they don't think logically, but I think they think logically. और उनमें भी, उनके कपल्स में भी मन मुटाव ज़रूर होता होगा, बट एनिमल्स आर मोर सिंपल. they live together, and they are not really fighting for silly things that we humans fight. At least उनके पास religion तो नहीं है. So this squirrel and bear represent the innocent love between Allison and Jimmy. The silly symphony acquires the vital animal character of love and stands as a sharp contrast to the conjugal world of a married couple in a class divided society. जैसा अभी बोला कि वो मैरिज में हमेशा कुछ खिचमिच लगा रहता है, बिकॉज ह्यूमंस थिंक लॉजिकली एंड they have trouble over little things, but these animals do not have these little silly things to fight. Moreover, it is a mode of escape from the pain of being human beings any longer. खेल जो होता है, किसी तरीके का भी गेम, जैसे IPL हो गया, तो वहाँ पे हम दूसरा सब कुछ भूल जाते हैं, उस खेल में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, खेल खेलते हैं, और एस्केपिज़म रहता है उसमें. जैसे रोमांटिक पोइट्री में एस्केपिज़म का मैटर था, यहाँ पे भी है. In the last scene, this game of bear and squirrel assimilates the fantasy roles of Jimmy and Allison into the real ones. When Jimmy utters the warning that there are cruel steel traps lying about everywhere, just waiting for rather mad, slightly satanic and very timid little animals. So लास्ट एक्ट में जिमी ये भी बोल रहा है कि ऐसे ट्रैप्स हैं जहाँ पे ये एनिमल्स फंस सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए जहाँ पे एंड होता है ड्रामा प्ले, जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे एक हारमनी है जो जिमी चाहता था पहले. Because the warning highlights the analogy of the 20th century society with a forest or a hunting ground rendered utterly insecure for innocent and defenseless creatures like Jimmy and Allison. So Jimmy and Allison जो एक मैरिड कपल है, वो अपना लाइफ शांति से क्यों नहीं रह पा रहे हैं? क्योंकि उनके लाइफ में कभी रिलीजन, कभी उनके मम्मी पापा, कभी हेलेना, कभी क्लिफ, कभी ये कभी वो, उनके बीच में आते रहते हैं, and they become disturbed. Religion, culture, society, the pressure of becoming a mother, or the pressure of doing a good job and living a luxurious life, all of these comes between their play, comes between their relationship, and that is why they cannot live in peace. But for the time being they can. So these symbols simply present various things as discussed, and highlight or heighten the meaning or the impact of the play. Okay, let us stop here today. Any questions, any doubts? If not, you may leave the meeting.